So this is a revision of wave motion 11th class. Basic concepts करेंगे which are required for both JEE and NEET. So सबसे पहले अगर हम concept करें कि what is wave motion, और इसके कौन से points आपको याद रखने हैं. So we say when a particle moves through space, so it carries kinetic energy. And wherever particle goes, energy goes with it. So that is the way energy is transferred from one point to another. मतलब एक तो हो गया particle way. Particle move कर रहा है तो अपने साथ kinetic energy carry कर रहा है. और अगर particle आगे जा रहा है तो its energy is going along with, that is transport of energy. There is another way which is transport of energy from one part to another without any motion of the individual particles. So that is wave motion. So we say that दो वे हो सकते हैं एनर्जी ट्रांसफर के कि व्हेन अ पार्टिकल मूव्स थ्रू स्पेस, it carries kinetic energy with it. And wherever the particle goes, energy travels along with it. So that is transfer of energy with actual motion of particles. Second way is that wave motion, transport of energy from one point to another without actual motion of particles. Transport of energy from one point to another without any actual motion. मतलब move तो कर रहे हैं but the particles may be moving along their mean position only without actual motion of particles from one point to another. Yeah, without motion of medium. Without actual motion of particles. So like sound wave है, तो sound wave में when somebody speaks, the energy travels but medium remains at rest. It's not that medium particles, the air particles starts traveling along with it. So they just hand over the disturbance. So it's the disturbance which is handed from one point to another. For example, in sound waves. तो हमने basically sound waves को ही पढ़ना है इस chapter में. Disturbance is handed from one point to another. Yeah, from one particle to another without actual motion of particles. Of medium particles. So that is what we refer as wave. तो wave को आप define कर सकते हो that it is disturbance that propagates in space. It transports energy and momentum without transport of matter. So जो इसमें important point है which you have to remember that wave is disturbance. Wave is disturbance which propagates in space. Transports energy, transports momentum. Transports energy and momentum. And no transport of matter or medium particles.
सो अब आता है कि वेव को हम क्लासीफाई कैसे कर सकते हैं. देयर कैन बी डिफरेंट काइंड्स ऑफ वेव, रिपल्स इन द water, or you can have the visible light, radio signal, infrared. All these are the cases of wave propagation through the medium. कि अगर somebody is speaking, like speak, अगर मैं बोल रहा हूँ तो it's sound energy which is produced changed into electromagnetic आप तक पहुंच रही है. So waves is an important topic. तो waves को हम classify कर सकते हैं. Waves को classify करने के different ways हो सकते हैं. Different ways, like you can classify the wave as, अगर हम classification करें तो फर्स्ट इज कि मीडियम के हिसाब से कि दो तरह की हो सकती हैं. कि एक वे हो सकता है क्लासिफिकेशन का ऑन द नेसेसिटी ऑफ मीडियम. इसमें हम दो वे क्लासिफाई कर सकते हैं, एक मैकेनिकल वेव्स और एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. मैकेनिकल वेव्स जिनको मीडियम चाहिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जिनको मीडियम नहीं चाहिए प्रोपेगेशन के लिए. So mechanical waves are, or sometimes these are also referred as elastic waves. And second is electromagnetic waves. They don't require medium for propagation. They can travel through vacuum also. तो एक तो ये वे हो गया क्लासिफाई का. दूसरा हो गया एनर्जी प्रोपेगेशन के हिसाब से. तो अगेन दो तरह की वेव्स हो जाएंगी अगर हम प्रोपेगेशन ऑफ एनर्जी की बात करें. एक जिसमें एनर्जी प्रोपेगेट करेगी, एक जिसमें नहीं करेगी. प्रोपेगेशन ऑफ एनर्जी जिसमें होगी दैट विल बी कॉल्ड प्रोग्रेसिव वेव, where the energy propagates. Or stationary waves, no propagation of energy. So this is second way कि पहला हो गया मीडियम. अब दूसरा होता है कि वेव प्रोपेगेट कैसे कर रही है. सो डायमेंशंस के हिसाब से इट कैन बी वन डायमेंशनल वेव, टू डायमेंशनल वेव और थ्री डायमेंशनल वेव. So you can classify on the basis of dimensions. One dimensional, two dimensional or three dimensional. So हम normally 2D तक ही पढ़ते हैं अभी. But wave can propagate in all directions also. So sound waves that it propagates in 3D all directions also. और दूसरा होता है अगर हम एक और वे क्लासीफाई करें ऑन द बेसिस ऑफ हाउ द पार्टिकल्स वाइब्रेट, कि वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल्स के बेसिस पे दे कैन बी टू वेव्स. लॉन्गिट्यूडनल जिसमें पार्टिकल्स वाइब्रेट पैरेलल टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन. Particle vibrates parallel to direction of propagation. Particle vibrates parallel to direction of propagation. In transverse wave, where the particle vibrate perpendicular to direction of propagation. So these are two waves, two ways in which they can be classified. So
बेसिकली ये वेव्स हो गई, कितने तरह से हम क्लासिफाई कर सकते हैं। जैसे हम 1D 2D 3D में नॉर्मली कंफ्यूजन रहती है कि स्ट्रिंग में जैसे वेव प्रोपेगेट कर रही है तो इट्स वन डायमेंशनल वेव, surface waves and ripples of water पे that is 2D, sound and light waves they are 3 dimensional waves। so तीन तरह की waves हो सकती है, मीडियम के हिसाब से क्लासीफाई कर सकते हो मीडियम चाहिए है या नहीं चाहिए, longitudinal एंड ट्रांसवर्स में क्लासीफाई कर सकते हो कि how the particles vibrate as the wave propagates। so हमने फर्स्ट करना है कि ट्रांसवर्स वेव मोशन कौन सी होती है। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ने की, ट्रांसवर्स वेव मोशन कौन सी होती है। सो मैकेनिकल ट्रांसवर्स वेव पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो है दैट इज इन 12th वेव ऑप्टिक्स में, लाइट इज अ ट्रांसवर्स वेव बट इट्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। सो अगर मैकेनिकल ट्रांसवेव की बात करें तो द ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ क्रेस्ट एंड ट्रफ मीडियम इज रिक्वायर्ड। So medium is required and this is how the wave propagates। So transverse wave में हम लेते हैं कि it's produced in a medium which has shearing property। shearing property होती है where the body changes its shape on the application of force। So shearing property is essential for transverse wave। So इसलिए इसको हम कई बार S wave या shear wave भी कह देते हैं। और हम ये मैकेनिकल ट्रांसवर्स वेव की बात करें, प्रोड्यूस्ड इन अ मीडियम having shearing property। shearing is a property को हम कह सकते हैं, shearing basically means that body which changes its shape on application of force। body which changes its shape on application of force। So mechanical transverse wave को लेते हैं, यहाँ पे solids में produce होती हैं, surface of liquids में, because they have shearing property। mechanical transverse wave in solids or surface of liquid। individual particles जो होते हैं they execute SHM perpendicular to the direction in which wave propagate। so points याद रखने पड़ेंगे because theoretical chapter है, कुछ कुछ formulas आएंगे velocity of sound waves के। individual particles vibrate perpendicular to direction of propagation of the wave, perpendicular to the direction of propagation of the wave, and that travels in the form of crest and trough। crest को हम कह देते हैं it's a portion of a medium which raised temporarily above the normal position of rest। travels in the form of crest and trough, travels in form of crest and troughs। crest की बात करें तो portion of medium in which particles are above the normal position of rest। above normal position of rest।
And troughs में they are raised, they are temporarily below the depressed, you can say, below the rest position. Depressed, and it's temporarily because they're oscillating. तो वो कभी नीचे जाएंगे कभी ऊपर आएंगे. Depressed, temporarily below the normal position of rest. So crest and trough की फॉर्म में ट्रैवल करेंगे. एंड डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव crest and trough की नॉर्मली अगर हम वेव को ड्रॉ करें तो इफ यू हैव अ नॉर्मल पोजीशन लाइक हमने ड्रॉ की कि ये नॉर्मल पोजीशन है. क्रेस्ट मतलब इस नॉर्मल पोजीशन से ऊपर है पार्टिकल, ट्रफ मतलब इससे नीचे है. तो वेव को हम शो कर सकते हैं कि वेव में इस फॉर्म में ट्रैवल करेगी. दो कंसेक्यूटिव क्रेस्ट में जो डिस्टेंस होगा या दो कंसेक्यूटिव ट्रफ में जो डिस्टेंस होगा दैट इज वेवलेंथ. ये क्रेस्ट वाला रीजन है. नॉर्मल पोजीशन से नीचे जो है दैट इज ट्रफ. दो कंसेक्यूटिव क्रेस्ट में भी वेवलेंथ के इक्वल डिस्टेंस होगा और ट्रफ में भी वेवलेंथ के इक्वल डिस्टेंस होगा. लॉन्गिट्यूडनल वेव जो होती है, सेकंड इज लॉन्गिट्यूडनल. Longitudinal wave is slightly different from the transverse wave. Second is longitudinal को अगर हम लिखें. They travels in the form of compressions and rarefactions. Particles vibrate parallel to direction of propagation. Compressions को हम लेते हैं, these are regions of high pressure, and rarefactions are region of low pressure. Travels in form of compressions. Compressions is high pressure region. And rarefactions. Rarefactions are low pressure region. And जो रीजन ऑफ हाई डेंसिटी है, मतलब उसको भी आप कंप्रेशन कह सकते हो. रीजन ऑफ लो डेंसिटी ऑफ पार्टिकल इज रेयरफैक्शंस. पार्टिकल्स वाइब्रेट पैरेलल टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन. इसमें भी होगी एसएचएमई बट पार्टिकल्स वाइब्रेट पैरेलल टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव. Particles vibrate parallel to direction of propagation. अब इसको एक और वे में विजुअलाइज कर सकते हैं. दिस इज कॉल्ड प्रोपेगेशन ऑफ प्रेशर और डेंसिटी फ्लक्चुएशंस. कहीं पे हाई प्रेशर है, कहीं पे लो प्रेशर है. So longitudinal waves can be visualized as longitudinal waves can be visualized as propagation of pressure or density fluctuations. और जो प्रेशर वेरिएशंस हैं दैट आर नॉट वेरी लार्ज. लाइक ऐसा नहीं है कि अगर मैं बोल रहा हूँ तो साउंड एयर में जो प्रेशर फ्लक्चुएशंस है वो बहुत ज्यादा हो जाएंगी. Atmospheric pressure का 10 raised to power 5 pascal है. This pressure fluctuation is of 1 pascal only. Pressure fluctuation is. Otherwise आपको फील होता है अगर कोई बोल रहा है कि pressure fluctuation. So as compared to atmospheric pressure, this pressure fluctuation is negligibly small. Pressure fluctuations are of the order of 1 pascal. जो atmospheric pressure, you know that it's 10 to the power 5 pascal. So अब अगर हम mechanical waves की बात करें different media में, तो mechanical wave will be transfer और longitudinal depends on nature of medium and आप कैसे excite कर रहे हो.
the mode of excitation. So we can read this as a mechanical wave can be transverse or longitudinal and depends on nature of medium and mode of excitation. मोड ऑफ एक्साइटेशन मतलब वो कौन वाइब्रेशंस प्रोड्यूस कर रहा है. आप स्ट्रिंग को लेकर अगर वाइब्रेट कर रहे हो उससे आप एक एंड से पकड़ के या मूविंग अप एंड डाउन तो it will produce a transverse wave. Sound है तो it will produce a longitudinal wave. So mode of excitation is also important. The strings है तो mechanical waves are always transverse when string is under tension. In gases and liquid, mechanical waves are longitudinal. For example, in strings. Mechanical waves are transverse, whereas in gases and liquids, liquid के surface पे transverse wave हो सकती है, but in gases and liquids, you can say in fluids, mechanical waves are longitudinal. Because they don't have the shearing property. Next इसकी कुछ properties आपको याद रखनी पड़ेंगी, which are referred as characteristics of wave motion. Characteristics of wave motion. हम कहेंगे first is disturbance travels due to repeated periodic oscillations. Because it's disturbance or it's propagation of energy. So disturbance travels through medium. Disturbance travels through medium due to repeated periodic oscillations. Repeated periodic oscillations. Energy is transferred without actual motion. ये हमने पहले भी point लिखा. Energy is transferred without actual motion of particle. अब हर पार्टिकल जैसे मैंने बोलना शुरू किया तो सबसे पहले मेरे लिप्स के पास जो पार्टिकल हैं वो वाइब्रेट करेंगे, फिर नेक्स्ट या स्ट्रिंग को आप एक कॉर्नर से अगर आप वाइब्रेट करना शुरू करते हो तो जिस पॉइंट को आपने एनर्जी दी पहले वो वाइब्रेट करेगा. So each particle receives a disturbance little later than the preceding particle. Each particle receives disturbance little later than the preceding particle. So वो एक phase difference आता जाएगा. और दो अलग velocities की बात होगी. एक wave propagate कर रही है, that will be wave velocity which is constant to a given medium. और दूसरा जिस velocity से particle vibrate करेंगे. So we can say wave velocity and जिस velocity से energy propagate कर रही है. Wave velocity is different from particle velocity
because particle velocity means velocity with which particles of the medium vibrates. Wave velocity constant होती है, particle velocity keeps on changing, mean position पे maximum, extreme पे zero. So we can say wave velocity is constant. Particle velocity is variable. Maximum at mean position, it's maximum at mean position. And zero at extreme position. And for propagation of medium, two essential properties are inertia and elasticity. And normally हम friction को neglect करते हैं. So essential properties for mechanical waves to propagate. And these are properties of the medium. Essential properties of medium. So हम दो properties लेते हैं. Inertia is required basically for transfer of energy. And elasticity so that particle returns to their mean position. And there should be minimum friction among particles for wave to propagate, otherwise it will be highly damped. Minimum friction amongst particles. अब इसके जो बेसिक चीजें हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव मोशन हमने पढ़ लिया. आपको बेसिक पता है वेवलेंथ क्या होती है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है. फेज हमें पता है कि अगर phases which contains all information related to any vibrating particle in a wave, अगर हम फेज को लिखें, अगर हम लिखते हैं y is equal to a sin omega d minus kx, तो omega d minus kx is the phase. So phase को हम कहते हैं which contains all information. It contains all information related to any vibrating particle in a wave. For example, if we write y is equals to, then omega t minus kx is the phase. Angular wave number, it's denoted by k, it's generally 2 pi by lambda. So ये basic चीजें याद रखनी पड़ेंगी. अगर से wave number होता तो radius is 1 by lambda, that's used in chemistry also. Angular wave number is 2 pi by lambda. Wave number की बात करें तो wave number is only 1 by lambda. Or you can say that 1 by lambda can be written as k by 2 pi. And it basically denotes number of waves in a unit length. Number of waves in unit length. So that is why it's called wave number. Particle velocity, particle acceleration, so इसके formula हम पढ़ लेंगे. Like normally अगर हम लिखते हैं कि y is equal to a sin omega t, अगर particle और wave velocity में relation निकालना है, तो अगर हम वेव की इक्वेशन को लिखते हैं कि वेव इक्वेशन इज a sin omega t minus kx, इसकी डेरिवेशन की थी +1 में.
We write it as a sin omega t minus kx. Particle velocity is rated with displacement changes with respect to time. So particle velocity is dy by dt. And sometimes you also write as curly y by curly t. This will be a omega cos omega t minus kx. अब वेव वेलोसिटी होती है velocity with which wave travels. That means lambda by t. Or you can say it's lambda into omega by 2 pi. Or you can say it's omega by k. So we can say that अगर हम इनको relate कर दें तो अगर इसकी वैल्यू निकालें curly y by curly x, this will be minus a by omega so you can say minus a by omega k cos omega t minus kx. Or you can say that minus 1 by v curly y by curly t is equals to curly y by curly x. इसको बेसिकली कई बार स्लोप भी बोलते हैं, स्लोप ऑफ स्ट्रिंग. अगर ट्रांसवर्स वेव है, स्लोप ऑफ स्ट्रिंग एट एनी पॉइंट x. वेव की जनरल इक्वेशन जो होती है डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑफ वेव, इसको हम लिख देते हैं इट्स कर्ली y by कर्ली x स्क्वायर. So equation important रहती है, you have to remember this. The Vp denotes the velocity of the wave. So कोई भी वेव होगी तो हमेशा ये रिलेशन सेटिस्फाई होगा. एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हमें पता है, एक्सेलरेशन इज माइनस ओमेगा स्क्वायर बाई, जो हमने एसएचएम में पढ़ा था, वही फॉर्मूला यहाँ भी यूज हो जाएगा. स्पीड ऑफ वेव को आप ऐसे भी लिख सकते हो कि स्पीड ऑफ वेव इज कोफिशिएंट ऑफ टी अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स. अगर हम वेव इक्वेशन को लिखते हैं ए एक्स प्लस बी टी, तो यू कैन से इट्स बी बाई ए. अगर हम वाई को लिखते हैं वाई एक्स टी, इट्स सम फंक्शन ऑफ ए एक्स प्लस माइनस बी टी. So we can say that v is equals to b by a, coefficient of t upon coefficient of x. प्लेन प्रोग्रेसिव वेव के डिफरेंट इक्वेशंस हैं जो हमको याद रखनी पड़ेंगी. इक्वेशंस ऑफ प्लेन प्रोग्रेसिव वेव मतलब एक y is equal to a sin omega t minus kx, बट उसको आप डिफरेंट फॉर्म्स में लिख सकते हो. इक्वेशंस ऑफ प्लेन प्रोग्रेसिव वेव. हम लिख रहे हैं वेव प्रोपेगेटिंग अलोंग एक्स एक्सिस. नेगेटिव एक्स एक्सिस होगा तो प्लस की जगह माइनस आ जाएगा. यहाँ दोनों ही लिख देते हैं. अगर हम एक इक्वेशन को लिखते हैं a sin omega t minus kx, this can also be written as y is equals to a sin omega को अगर हम कॉमन ले लें t minus x by v, or you can also write it as y is equal to a sin omega can be written as 2 pi by t, k can be written as 2 pi by lambda into x. Or you can say y is equals to, because compare करके then you can find the quantities. की वजह से comparison से आंसर निकालने होते हैं. t by t minus x by lambda. अब अगर वेव अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस ट्रैवल कर रही है, वेव ट्रैवलिंग अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस, ये हमने पॉजिटिव एक्स एक्सिस के लिए लिखा था, तो हम कर देंगे y is equals to a sin omega t plus kx
सारी इक्वेशंस में प्लस लग जाएगा. A sin 2 pi t by t plus x by lambda y is equals to A sin omega t plus x by v. अब ये हम ले रहे हैं कि if initial phase is zero, if pi is the phase difference between wave traveling along x direction and another wave, then equation of other wave. If pi is initial phase difference between two waves, then equation of other wave is y is equals to A sin 2 pi t by t minus x by lambda plus minus phi, depending initial phase gap plus a minus s, you can write that. So that is how the wave equations are represented. Then is intensity of wave. Intensity basically is energy flowing per unit area per unit time. Because when wave propagates, it's the energy which is flowing. So we say the amount of energy flowing per unit area per unit time. And it's generally written as I is equals to 2 pi square nu square a square rho v. Nu is the frequency, or you can say ये basically ये concept सबसे ज़्यादा use होता है. Now if P is the power of isotropic source, then you can say intensity is power upon 4 pi r square. I proportional to 1 by r square if there is a point source. And if you have linear source, then area will be 2 pi rl. Because फिर सिलेंडर का एरिया लेना पड़ेगा स्फीयर की जगह. And I will be inversely proportional to r. So you can say that for point source, I proportional to a square, I proportional to 1 by r square means a proportional to 1 by r. For linear source, I proportional to a square and a proportional to 1 by r. So a proportional to 1 by root r. So you have to remember these two formulas intensity के questions करने के लिए.